masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy? Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. आप देख लीजिए वो जो जयशंकर साहब हैं जो उनके वजीर खारजा, ठीक है, उनकी तकरीर देख लीजिए, उनके तकरीर का फोकस पॉइंट देख लीजिए। यहाँ बैठ के नजर उतारूंगा, इंटेलेक्चुअलिस्ट से देखते। This is what he told Antony Blinken, and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। और ये बात जो उन्होंने की वो सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि जो मैंने कंट्रीज कहे उन सब पर ये बात लागू होती है। तो हकायक हैं, हम तो अमी तजिया निगार, क्या तजिया निगार कसाईयों की तरह पुट की बोटी चाप की बोटी। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। सीरियसली आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई एम सो क्यूरियस टू सी हिम, टू वॉच हिम। मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है that both are calling each other as Tony and Jay. Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. So look at the level of the confidence and look at the level of the conversation. डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे, और ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमैट। चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है। सुभान अल्लाह। फिर क्या वजह है कि इंडिया चाहे वेस्ट हो, चाहे रशिया हो या कोई भी कंट्री हो, as the only spokesperson of the global south, the Indians, the Chinese are there but the Chinese cannot speak. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A2Z में। दोस्तों, भारत की विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और एस जयशंकर प्रसाद के बेबाक बोल के सामने तो अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन सबके सब बगले झांकते रह जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के सामने बेबाक शब्दों में ये बात कह दी कि अगर भारत अन्य देशों के साथ मित्रता रखता है, इसका मतलब भारत के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, इसका मतलब वो उनसे ज़्यादा स्मार्टर हैं और उन्हें इस बात पर उनकी बड़ाई करनी चाहिए, ना कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तो टोनी ब्लिंकन उनका मुंह देखते रह गए और पूरी दुनिया की मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, वो सब हंस पड़े। तो दोस्तों, देखिए जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो के सामने आने के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि कैसे अमेरिका के विदेश मंत्री को खुलेआम चेतावनी दे दी गई। Shankar, India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want whenever you want? Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. No. So. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's a alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded.
in our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. उन्होंने कहा कि this is what he told Anthony Blinken, and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा choices हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक इन फ्यू डेकेड्स बैक वी हैड एन ऑप्शन, आइदर वी शुड गो टू द सोवियत यूनियन और वी शुड गो टू द अमेरिकन ब्लॉक, एंड वी डिसाइडेड टू बी इन द अमेरिकन ब्लॉक एट दैट टाइम. सो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस. सो ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ही वाज टेलिंग, ही वाज बेसिकली इन अदर वर्ड्स ही वाज एजुकेटिंग और ही वाज ट्राइंग टू गिव अ लेक्चर टू टोनी ब्लिंकन कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो. आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. Do not take us as in a way कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी इन अ सेंस कि ही वाज हैप्पी इन अ सेंस के, या आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैप्पी, मतलब ही वाज लुकिंग डॉक्टर जयशंकर फ्रॉम अ लेंस कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है. और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एस्टोनिश्ड भी था कि मतलब ही इज टॉकिंग दिस वे. सो विच इज आपकी जो है अब जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो थे, दे आर इन टू इट. वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों वेस्टर्न डोमिनेंस के नीचे रहें, ठीक है जी. और अभी वो कह रहे हैं 30 ममालिक इसको ज्वाइन कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक. ऑल्टरनेट ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद यू एज वेल. सो डॉक्टर जयशंकर ने ही गिव अ वेरी टफ टाइम टू एंथनी ब्लिंकन. ट्रस्ट मी, इफ आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, सो द पर्सन वाज टॉकिंग in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती, मेरी होशियारी को admire करो यार. तुम क्यों jealous हो जाते हो कभी-कभी मुझे देख के? सो ये थी डॉक्टर जयशंकर की. अगर आप उसको यू वॉच इट एंड वो जो आई लाइक इट अ लॉट जो उसने कहा कि अच्छा लुक, दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians. The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative of the global south. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC A2Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.